बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शफ़क़त अब्बास मिनहास। आज हम चैप्टर नंबर 8 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और टॉपिक का टाइटल है डॉपलर इफ़ेक्ट। हम स्टार्ट करते हैं। डॉपलर इफ़ेक्ट बेटे ये एक वेव फिनोमेना जो तमाम वेव्स पर इक्वली एप्लीकेबल है, चाहे वो वेव्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हों, चाहे वो वेव मैकेनिकल हों। अब जो हैंड डॉपलर्स ने इस इफ़ेक्ट को पहले इस डॉपलर इफ़ेक्ट को पहले डिटेक्ट किया और वो इस तरह है कि जब भी किसी सोर्स ऑफ वेव और डिटेक्टर के दरमियान रिलेटिव मोशन होती है, उस रिलेटिव मोशन की वजह से देयर इज़ एन अपीरेंट चेंज इन दी frequency of that wave. This effect is known as Doppler effect. So how we can define it? Precisely we can define it like this: whenever there is a relative motion between the source of sound and the detector, which is normally your human ear or listener, whenever there is a relative motion between them, there is an apparent change in the frequency of that sound, and this is known as Doppler's effect. Okay, तो इसके ना 4 केसेस हैं। इसके 4 केसेस इस तरह हैं कि अगर आपका सोर्स स्टेशनरी हो और लिसनर सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है वो क्या होगी, और व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। दूसरा केस ये है कि अगर सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी हो और लिसनर या ऑब्जर्वर सोर्स से अवे मूव कर रहा हो तो ऐसी सूरत में वेव में की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो अपीरेंट चेंज है उसका क्या फार्मूला होगा वो हम ड्राइव करेंगे। फिर तीसरा केस, अगर सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहा हो और लिसनर स्टेशनरी हो, और देन व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर the estimated frequency, and then we will find the frequency of the sound wave when the source is moving away from the stationary listener. ये 4 केसेस हमने डिस्कस करने हैं। तो केस नंबर 1 हम पहले डिस्कस करते हैं, when source is stationary and listener is moving toward the stationary source. Case 1, when source is stationary, okay, and listener is moving towards it. We have a bell, which is a source of sound, which is emitting sound waves in air in the form of compressions and rarefactions. These solid circular lines, these are representing compressions which are spreading away from the source S in all possible direction with same speed. Of course, there will be a rarefaction between 2 compression. This is compression, this is compression, this is compression. Between 2 compression there is a rarefaction. Over here we have a listener or observer. Now if listener is stationary, source is stationary, listener is receiving F waves in 1 second. Let F is the actual frequency of sound waves emitted by the source S.
Okay. If lambda is the wavelength of the wave and v is speed of sound, then lambda will be equal to v over f. This is your equation 1. Let listener let listener starts moving toward the source S with speed u naught meters per second. After 1 second, the listener will cover distance u naught meter. The new position of listener is L2. Now, when listener is stationary, listener was receiving F waves in 1 second. But when the listener start moving toward the stationary source, listener will receive more waves in 1 second. Now, how many waves the listener will receive more than the number of waves when the listener was stationary? That are the number of waves which are occupied in the distance L1, L2. यानी L1, L2 डिस्टेंस में जो नंबर ऑफ वेव्स ऑक्यूपाइड हैं वो लिसनर ज़्यादा सुनेगा 1 सेकंड में बनिस्बत उस केस के जबकि लिसनर स्टेशनरी हो. तो अगर L1, L2 डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स डेल्टा F के बराबर हैं तो अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो लिसनर रिसीव करेगा व्हेन इट इज़ मूविंग टूवर्ड द स्टेशनरी सोर्स वो कितनी हो जाएगी? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी F प्लस डेल्टा F. तो द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी of the sound will be FA, which is equal to actual frequency F plus delta F. जबकि ये मैं बात कर चुका हूँ कि डेल्टा F से मुराद वो वेव्स हैं जो कि लिसनर 1 सेकंड में ज़्यादा सुनेगा कि जबकि लिसनर सोर्स की तरफ मूव कर रहा हूँ. और हमने ये देखना है कि ये जो डेल्टा F जो कि नंबर ऑफ़ वेव्स ऑक्यूपाइड है L1, L2 डिस्टेंस में ये नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है, ये डेल्टा F हमने फाइंड करनी है. इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें. जबकि F एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और डेल्टा F वो फ्रीक्वेंसी में तब्दीली है जो कि डेल्टा F से मुराद फ्रीक्वेंसी में चेंज है. और ये फ्रीक्वेंसी में चेंज किसको रिप्रेजेंट करी है? वो एक्स्ट्रा वेव जो कि लिसनर 1 सेकंड में ज़्यादा सुन रहा है जबकि वो L1 से L2 की तरफ मूव कर रहा है. अब डेल्टा F को निकालते हैं.
डेल्टा एफ को निकालने का ये तरीका है कि हाउ मेनी वेव्स आर ऑक्यूपाइड इन यू नॉट मीटर्स। तो एक वेव कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई करती है, एक वेव जितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई करती है वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है। तो मीन अगर डिस्टेंस लैम्डा के बराबर हो, अगर डिस्टेंस लैम्डा के बराबर हो तो लैम्डा डिस्टेंस में कितनी वेव होंगी, लैम्डा डिस्टेंस इन अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा number of waves are 1। एक वेव अगर मैं डिस्टेंस लैम्डा दिखाऊं तो लैम्डा से मुराद ये डिस्टेंस है, इसमें कितनी वेव्स हैं, इसमें एक वेव है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस 1 मीटर हो तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएगी 1/λ। और अगर डिस्टेंस u0 मीटर हो तो फिर नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएंगी u0/λ। यानी दूसरे लफ्ज़ों में डेल्टा एफ किसके बराबर हुआ, u0/λ। ये वो वेव्स हैं जो लिसनर ज़्यादा सुनेगा 1 सेकंड में जबकि वो स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा होगा। तो अब ये डेल्टा एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ इन इक्वेशन नंबर 2। तो मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी एफ ए विल बी इक्वल टू एफ प्लस u0/λ, जबकि लैम्डा इक्वेशन नंबर 1 से क्या था, वेयर लैम्डा वाज इक्वल टू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और एफ ए विल बी इक्वल टू एफ प्लस u0, लैम्डा की वैल्यू v/f थी, ये वैल्यू पुट कर दी, हैंस द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ ए विल बी इक्वल टू एफ प्लस u0/v इंटू एफ। एफ को कॉमन निकाल लें, एफ ए विल बी इक्वल टू एफ ए विल बी इक्वल टू 1 प्लस u0/v इंटू एफ। v एलसीएम ले लें, एफ ए विल बी इक्वल टू v प्लस u0/v इंटू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन लिसनर इज़ मूविंग टूवर्ड द स्टेशनरी सोर्स। और अगर हम इस इक्वेशन को एग्जामिन करें तो ऑन एग्जामिनिंग दिस इक्वेशन विल गेट दिस रिजल्ट, एफ ए द मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब हम केस नंबर 2 पर आते हैं। केस नंबर 2, व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी एंड लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम इट। केस सेकंड, when source is stationary and listener is moving away from it. Assuming this was the initial position of the listener L1, now listener is moving in this direction. Now after 1 second, the new position of the listener will be, after 1 second, the new position of the listener is L2, because now we are dealing with a case when listener is moving away from. In first case, the listener was moving toward the source. Now the second case, the listener is moving away from the source. This is the position of the listener, initial position of the listener, L1, before it takes off, starts, and after 1 second, the listener will, moving with velocity u0, how much distance it will cover, that is equal to u0 meter. This is very important because the speed of the listener is u0 meter in 1 second, meter per second. इसका मतलब क्या है कि u0 मीटर डिस्टेंस लिसनर कवर करेगा 1 सेकंड में। तो L1 इनिशियल पोजीशन है, L2 लिसनर की पोजीशन है, आफ्टर 1 सेकंड। तो while moving with velocity u0 meter per second, listener will cover how much distance in 1 second, that will be equal to u0 meters. Now the waves are coming from this source in this direction. Now इसका मतलब है कि अगर लिसनर सोर्स से अवे मूव कर रहा है तो
L1 L2 डिस्टेंस में जो नंबर ऑफ वेव्स ऑक्यूपाइड है वो हमेशा लिस्नर के पीछे रहेंगे. अब ये वेव तो वो रिसीव नहीं करेगा ना. These waves the listener will not receive. Listener will not receive these waves which are occupied in distance L1, L2. Therefore, how many waves the listener will receive in 1 second? That will be actual frequency minus the number of waves occupied in this my distance. The number of waves occupied in this my distance are number of waves occupied in this my distance is is delta f. So how many waves the listener will receive in 1 second when it is moving away from the source? Let the number of waves received by the listener in 1 second when moving away from the source is FB will be equal to actual frequency F minus delta. This is very important. ये बड़ा पॉइंट समझने वाला है कि अगर लिसनर स्टेशनरी है तो इन दैट केस जितनी 1 सेकंड में सोर्स वेव्स एमिट कर रहा है वो सुन लेगा, तमाम की तमाम वो 1 सेकंड में रिसीव कर लेगा. लेकिन अगर लिसनर सोर्स से अवे मूव कर रहा है तो 1 सेकंड में जो लिसनर ने जितना फासला तय किया है उसमें जो नंबर ऑफ वेव्स ऑक्यूपाइड है वो हमेशा लिसनर से पीछे रहेंगी. लिसनर उन आउट ऑफ एफ वेव्स वो वेव्स नहीं सुन सकेगा. आउट ऑफ एफ वेव्स एमिटेड बाय द लिसनर सोर्स इन 1 सेकंड, लिसनर विल नॉट रिसीव दोज वेव्स विच आर ऑक्यूपाइड इन हाउ मच डिस्टेंस, इन अ डिस्टेंस ऑफ L1 L2. अब L1 L2 डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स जो हमने ऑक्यूपाइड है वो पहले निकाली, केस नंबर 1 में निकाली थी. व्हाट वाज डेल्टा एफ, वेयर डेल्टा एफ इज इक्वल टू यू नॉट बाई लैम्डा. ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें तो एफ बी विल बी इक्वल टू एफ माइनस यू नॉट बाई लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, एफ बी विल बी इक्वल टू एफ माइनस यू नॉट वी बाई लैम्डा वी बाई एफ. सिंप्लीफाई करें तो विल गेट दिस इक्वेशन, एफ बी विल बी इक्वल टू एफ माइनस यू नॉट by V into F, और यहाँ से F को कॉमन निकाल लें, एफ बी विल बी इक्वल टू एफ कॉमन इनसाइड 1 माइनस यू नॉट बाई वी. एलसीएम ले लें तो एफ बी विल बी इक्वल टू वी माइनस यू नॉट बाई वी इंटू एफ. दिस इज द फार्मूला फॉर द apparent frequency. Now the frequency of the sound the listener will measure, that will be equal to V minus U naught by V, which on examining this equation we'll say that we can prove that VFB is always less than F. नहीं, जो listener जो sound wave receive करेगा उसकी जो frequency है actual frequency F से कम होगी. This is your case number 2. Now case number 3, when source is moving toward the stationary listener. When source is moving toward the stationary listener. Case number 3. Case number 3, when source is moving toward stationary listener. We have source of sound which is mounted on the carriage
We have a listener, source of sound S, listener or observer L. Initially, for sake of simplicity, let the source and listener, they are at a distance of V meter, mean the distance the sound wave cover in 1 second. If the speed of sound is V meter per second, mean that sound waves are covering a distance of V meter in 1 second. तो initially listener और source दोनों stationary हैं और listener जो है वो source से उस फासले पर है जो कि sound wave 1 second में travel करती हैं, that is equal to V meter. Now let F is the frequency of the sound waves emitted by the source. Now if frequency of the sound is F, that means this source is emitting F waves in 1 second. That means number of waves emitted per second by the source all are occupied in how much distance? They will be occupied in a distance of V meters. This is the case when source and listener both are stationary. Suppose now that source, listener is stationary at the same position. Now let the source start moving toward the stationary listener with a speed of US meter per second. So after 1 second, the new position of the source will be this. New position of the source after 1 second. अब सोर्स जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना आगे चला गया है बाई ए डिस्टेंस ऑफ US मीटर. Because we are discussing an event in 1 second, so it means if the source is moving toward the stationary listener with a speed of US meter per second, it means a distance covered by the source in 1 second will be equal to US meters. So now the number of waves emitted by the source S will be occupied in how much distance? They will be occupied in this much distance, which is not to V, but which is equal to V minus US. इसमें ज़रा क्लियर हो जाए, V क्या है? स्पीड ऑफ साउंड. US क्या है? Speed of the source, speed of source, okay. F क्या है? Actual frequency of sound. Now what will be the new wavelength? The modified wavelength, lambda c will be the distance occupied V minus US divided by number of waves which are equal to F. Now what will be the speed of the sound will be equal to the modified wavelength lambda c into frequency fc, because speed is a product of wavelength and frequency. Speed of the wave will not change. Speed of the sound is independent of the motion of the observer, whether it is rest or it is moving. In both the cases, the sound waves emitted from the source its speed will remain constant. So if the wavelength will decrease, because फर्स्ट पहले जो थी नंबर ऑफ वेव्स v डिस्टेंस में ऑक्यूपाइड थी, अब वही नंबर ऑफ वेव्स v माइनस US डिस्टेंस में ऑक्यूपाइड हैं. इसका मतलब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पहले की बनिस्बत एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, और अगर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन एक दूसरे के ज़्यादा करीब आएंगे तो फिर वेवलेंथ जो थी है वो एक्चुअल वेवलेंथ से कम हो जाएगी. अब उस मॉडिफाइड वेवलेंथ को हम लैम्डा सी कह रहे हैं और मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी एफ सी है. तो दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल द स्पीड ऑफ साउंड दैट रिमेन्स
कांस्टेंट v इज इक्वल टू लैम्डा c इंटू एफ सी। तो यहाँ से एफ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हाट इज एफ सी फ्रॉम एयर? एफ सी विल बी इक्वल टू v ओवर लैम्डा सी। लैम्डा सी की वैल्यू पुट कर दें, एफ सी विल बी इक्वल टू v अपॉन जी v माइनस यू एस डिवाइडेड बाई एफ, और से सिंप्लीफाई करें तो विल गेट v ओवर v minus us into f. This is the formula for the apparent frequency of the sound when source is moving toward the stationary. आपको चौथा केस नंबर 4, when source is moving away from stationary listener. Case number 4. Now like new this is the initial position of the source when source and listener was stationary. After 1 second, the new position of the source will be this. In 1 second, try to understand. This figure says that source and from this figure, source is stationary, listener is stationary. Initial distance between source and listener is v meter, which is the distance covered by the sound waves in 1 second. Okay. After, let's say now the source is moving away from the listener with how much speed? With speed of us meter per second. In 1 second, the source will be displaced us meter. After 1 second, the new position of the source is US meter ahead of its first position. यानी ये सोर्स है अपनी इनिशियल पोजीशन से US मीटर आगे चला जाएगा 1 सेकंड में। अब उसने पहली वेव यहाँ पर जनरेट की थी, वो तो 1 सेकंड में यहाँ पर पहुँच गई। 1 सेकंड जब कंप्लीट हुआ तो सोर्स यहाँ पर आ गया। इसका मतलब वही f नंबर ऑफ वेव जो पहले v डिस्टेंस में ऑक्यूपाइड थी, अब वो कितने डिस्टेंस में ऑक्यूपाइड होंगी? दिस माई डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस किसके बराबर? ये डिस्टेंस ये v है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू v प्लस us. Now what will be the modified wavelength? Modified wavelength lambda d will be equal to the distance occupied by f waves v plus us divided by the number of waves. Now what will be the speed? Speed of the wave v is equal to lambda d into fd. तो यहाँ से एफ डी आप मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी निकालें, वी डी एफ डी इज इक्वल वी ओवर लेमडा डी। लेमडा डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, वी अपॉन वी प्लस यू एस डिवाइडेड बाई एफ, और एफ डी विल बी इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू एस इंटू एफ। और अगर हम इस इक्वेशन को एग्जामिन करें तो वी कैन से दैट एफ डी इज़ ग्रेटर दैन एफ, यानी मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से बढ़ जाएगी। दिस इज़ व्हाट अबाउट द डॉपलर इफेक्ट। ये 4 केसेस मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। अब अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क।